everybody, and welcome back. My name is Annie, and today I am here to talk about this another prose work, The Hindu View of Life by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Okay, now this work was originally delivered as lectures at Manchester College, Oxford in 1926. And this work presents Radhakrishnan's exposition of Hinduism, not merely as a religion, but as a comprehensive way of life. He emphasizes philosophical depth, spiritual inclusivity, and adaptability. Okay, this this text is divided into four parts. There are, you can say, four lectures are there. The first one is named Religious Experience, Its Nature and Content. ठीक है, religious experience, its nature and content. The key themes are, he talks about religion as experience, he talks about intuition over intellect, he talks about university in diversity and dynamic traditions. And there are some notable references here, like Advaita Vedanta. So he emphasizes the pinnacle of spiritual realization, advocating for non dualism. I'll come back to this, but first let's talk about the different four lectures that are there. The second lecture is named Conflict of Religions, the Hindu Attitude. The third one is Hindu Dharma, part 1, and the fourth one is Hindu Dharma, part 2. Okay, let's start with the background information of about the author. I told you Sarvapalli Radhakrishnan, who doesn't know him, born in 1888, passed away in 1975, a philosopher, also the first vice president and second president of India, one of the foremost interpreters of Hindu philosophy and a Western for a Western audience. So उन्होंने Western audience के लिए Hindu philosophy को बहुत अच्छे से अपने वर्क में डाला है. ठीक है, तो बुक जो है उसका ओरिजिन क्या है? 4 lectures which were delivered in 1926 at Manchester College, Oxford, under the Upton Lectures. Radhakrishnan, he sought to counter the Western critiques of Hinduism. जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी श्री औरोबिंदो की, वो भी वेस्टर्न कुछ क्रिटिक्स थे, उनको क्रिटिक कर रहे थे, उनके क्रिटिक के लिए. Too many critiques. So Radhakrishnan also sought to counter the Western critiques of Hinduism. वो लोग कहते थे कि irrational है ये Hinduism, Hindu beliefs और socially regressive हैं, तो इन्होंने उसको counter किया है. And he emphasized the philosophical depth and ethical universality of Hinduism. कि आप अगर देखोगे तो आप पाओगे कि यूनिवर्सैलिटी है इसमें, एथिक के बेसिस पे फिलोसफिकल डेप्थ है बहुत ज्यादा. तो पर्पस क्या था ये वर्क लिखने का? टू आर्टिकुलेट अ मॉडर्न, लिबरल एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म दैट रिटेन्स इट्स spiritual essence while engaging constructively with science, modernity, and other religions. Okay, let's break down the lectures now. The first lecture, Religious Experience, Its Nature and Content. इसेंस ओवर रिचुअल. तो राधा कृष्णन जो है वो स्ट्रेस करते हैं कि रिलीजन को इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डॉगमा, द कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स जो हैं, जो बनाए हुए हैं, उनसे उसको आप अलग करो. और फिर आपको कोर में क्या मिलेगा? स्पिरिचुअल इंट्यूशन, अनुभव, अ डायरेक्ट इनर रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ. हाउ ब्यूटिफुली पुट. It should always be like that. Religion, I always say, is something very personal. It shouldn't be talked about as if it's a matter of conflict, a matter of something to be fought over, because everybody has, even in Hinduism or in any other religion, everybody has a different belief system. So it's all spiritual intuition. Anubhav, aapka kya anubhav hai? Realization of truth. Second, he talks about universality of mystical experience. So across traditions, चाहे वो Christian mystics हो, चाहे वो Sufis हो, religious experience points to one common source, affirming the inner unity of all religious consciousness. He then talks about types of religious minds,
तो 3 स्टेजेस की वो बात करते हैं, प्रिमिटिव बिलीफ, एथिकल रिलीजन एंड mystical religion. Primitive belief in magic and external control. Ethical religion with moral codes. And mystical religion marked by self transcendence. He identifies these 3 stages of religious development. Okay. And he says truth is infinite. कोई एक scripture, कोई एक prophet को आप सुन लो. It's not a monopoly. So no one prophet or no one scripture has monopoly over truth. Hinduism therefore remains open-ended. It's not telling you to believe what is there in it. So it encourages inner exploration. This is in the first lecture mostly. Oops, sorry. Second lecture has it's named conflict of religion. Conflict of religions, the Hindu attitude. Now he talks about Hindu tolerance. So unlike the exclusive creeds, Hinduism views religions as different expressions of the same truth. ये कहते हैं कि बाकी सबको, unlike all the exclusive creeds, जो हिंदुइज्म है वो सारे रिलीजन्स को देखता है एज डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम ट्रूथ, owing to the diversity of human temperaments. अलग अलग हम लोग अपने अपने हिसाब से, एज आई सेड, अपने अपने बिलीव्स के हिसाब से, अपना फेथ सबका होता है, अपना ट्रूथ सबका होता है. सो इट्स ऑल सेम ट्रूथ बट डिफरेंट एक्सप्रेशंस. देन ही टॉक्स अबाउट ऋग्वेदा. एकम सत विप्रा बहुधा वेदांति. What does it mean? Truth is one. The wise call it by many names. This is a quote. Ekam Sat. What? Truth is one. Vipra Bahudha. Bahudha is many. So Vedanti. The wise call it by many names. So forms of backbone of Hindu pluralism. So he talks about Hindu pluralism. रिलीजन एंड फिलोसफी की फिर बात करते हैं. वो कहते हैं हिंदुइज्म जो है वो फिलोसोफाइज करती है रिलीजन को, उसको डॉगमेटाइज नहीं करती है, फिलोसफाइज करती है. इट एनकरेजेस क्वेश्चनिंग, डिबेट एंड स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी. Then there is a critique of Western religions. So without being dismissive, Radhakrishnan critiques Christian exclusivism. मिशनरी जील को भी क्रिटिक किया है, दैट फेल्स टू अप्रिशिएट द डीप मेटाफिजिकल एंड एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ हिंदू थॉट. सो ही सेज हिंदुइज्म इज इक्वल टू सनातन धर्म, इटर्नल ऑर्डर, नॉट लिमिटेड टू क्रीड और एथनिसिटी. सनातन धर्म, इटर्नल ऑर्डर. थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर इज हिंदू धर्म, पार्ट 1. He gives the definition of dharma. It's not religion, it's not mere religion, but it's the moral law, spiritual order, and ethical compass that sustains individual and collective life. वर्ण की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, which originally functional and flexible based on guna qualities, gun, and karma, actions. It's not based on hereditary कास्ट सिस्टम. कोई हेरिडिटरी प्रिविलेज के ऊपर नहीं. ओरिजिनली इट वाज फंक्शनल एंड फ्लेक्सिबल. गुण पे होता था, क्वालिटीज पे, कर्म पे होता था. बाद में ऑफ कोर्स चेंज हो गया. एंड देन राधा कृष्ण कंडेम्स द कास्ट रिजिडिटी एंड अनटचेबिलिटी एज करप्शंस ऑफ धर्म. हर चीज में करप्शन आ जाती. तो धर्म में जो करप्शन आई वो ये आई कि उन्होंने फिर रिजिडिटी लेके आए वो कास्ट सिस्टम में, अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया. Role of individual. So he emphasizes on self-cultivation, on education and discipline. Tapas as paths to spiritual maturity. तप नहीं करोगे तो spiritual maturity पे नहीं पहुंचोगे. ये path है. Then criticism of materialism. तो material prosperity, अर्थ और pleasure को इन्होंने critique किया है. They are valid only when guided by dharma. Proper guidance के अंडर they are fine.
Then moving on to the part 2 of Hindu Dharma, lecture number 4. He talks about, he elaborates 4 aims of life. Purushasthas. Purushasharthas. सबसे पहला धर्म, which is righteousness. दूसरा अर्थ, which is wealth. Third, kama, which is desire. And number 4 is moksha, liberation. He says these are to be pursued harmoniously, not in isolation. एक एक नहीं, harmoniously इनको आपने pursue करना है. पुरुषार्थास, इसका नाम है पुरुषार्थास. The 4 aims of life: dharma, artha, kama, moksha. Then integration of worldly and spiritual. So Hinduism, he says, does not deny life, but it affirms it, making space for joy. बहुत rigidity नहीं आपको देता है. Actually, if you look at it, जितने भी हमारे सारे तो नहीं, I will not say all, but as a religion, wholesome, it's not very strict in those sense. It's liberate. There is liberation in it, and it makes space for a lot of things: joy, creativity, action within a spiritual framework. Then he talks about the ideal person, Jivan Mukta, a spiritually realized being who lives in the world but not of it, detached yet compassionate. That is the ideal person. रीबर्थ और कर्म की बात करते हैं. लाइफ इज अ स्कूल फॉर द सोल, और जो कर्म है वो इंश्योर करते हैं मॉरल कंटिन्यूटी अक्रॉस लाइव्स. हार्मनी और सिंथेसिस की बात करते हैं. वो कहते हैं कि हिंदुइज्म स्ट्राइव्स टू हार्मोनाइज द इटर्नल विद द टेम्पोरल, रीजन विद फेथ, इंडिविजुअल विद सोसाइटी. ठीक है, अब एक बार मैं आपको सारे की नेम्स जो इस टेक्स्ट में मेंशन्ड हैं वो बताने वाली हूं. जो टेक्स्ट्स मेंशन्ड हैं: वेदास, उपनिषद्स, भगवद गीता, मनुस्मृति, ब्रह्म सूत्रास, वेदांता, Christian Bible, indirect references there, Quran, it is mentioned in the context of Islamic mysticism. ठीक है, तो वेदास, उपनिषद, भगवद गीता, मनुस्मृति, ब्रह्म सूत्रास, वेदांता, Christian Bible and Quran. Who are the philosophers and thinkers that are mentioned in the text? Swami Vivekanand, Shankara, Adi Shankaracharya, Ramanuja, William James on psychology of religion, Henry Bergson when he talks on intuition, तो इनका नाम लेते हैं. Plato and Aristotle का भी नाम है. Buddha as a reformer within Hindu tradition, Jesus Christ as an enlightened soul, Muhammad in context of religious experience, Rabindranath Tagore, and Ramakrishna Paramhansa. So these are the major thinkers and philosophers who are mentioned in the text. Once more, Swami Vivekanand, Adi Shankaracharya, Ramanuja, William James, Henry Bergson, Plato and Aristotle, Buddha, Jesus Christ, Muhammad, Ramakrishna Paramhansa and Rabindranath Tagore. Okay. अब अगर की फिलोसफिकल इंसाइट्स लेनी है बाय राधा कृष्णन, तो ये क्या क्या कहते हैं? नंबर 1, रिलीजन इज नॉट ब्लाइंड फेथ बट इट इज इंट्यूटिव नॉलेज. Hinduism evolves, it is not static. There is no conflict between faith and reason. All religions are valid paths to truth. Dharma is not legalism, it's inner integrity. And spiritual freedom, moksha, is the highest human goal. That's what these are the key philosophical insights by Radhakrishnan. So this work is, of course, very essential for understanding Hinduism's intellectual defense against colonial critique, for grasping Hinduism as a spiritual philosophy, not as a rigid dogma, and seeing how Indian religious thought, it intersects with modern humanism, ethics, and comparative theology. Okay? So this is about the work, The Hindu View of Life. अब दोबारा से एक बार टाइटल सोचो तो, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बाय राधा कृष्णन. आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. ठीक है,
क्विक रिविजन अगेन, लेक्चर 1 रिलीजियस एक्सपीरियंस, जहां पे ये रिलीजन को एज एन एक्सपीरियंस बताया है, इंट्यूशन ओवर इंटेलेक्ट, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, डायनामिक ट्रेडिशन की बात की है। यहाँ पे इन्होंने अद्वैता वेदांता, भगवत गीता, उपनिषद, स्वामी विवेकानंद को रेफर किया है। लेक्चर 2 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स, द हिंदू एटीट्यूड, सो यहाँ पे ये रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात करते हैं। राधा कृष्णन अंडरस्कोर्स Hinduism's inherent tolerance and acceptance of multiple paths to the divine. There is a critique of exclusivism, and there is interfaith harmony की बात की है, mutual respect और understanding होनी चाहिए amongst all religious traditions. Notable references here are Christianity and Islam, Western philosophers like William James, Henry Bergson. फिर पार्ट 3 हिंदू धर्म, धर्म को डिफाइन किया है, कास्ट और सोशल ऑर्डर की बात की है, एजुकेशन और कल्चर की बात की है, भगवत गीता और मनुस्मृति को रेफर किया है। एंड लेक्चर 4 हिंदू धर्म पार्ट 2, जहां पे स्पिरिचुअल गोल्स की बात करते हैं। 4 पुरुषार्थास की बात की है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ड्यूटी, वेल्थ, डिजायर, लिबरेशन as guiding principles of life. Then integration of life aspects, role of individual, and again Upanishads have been referred to, Bhagavad Gita has been referred to. I hope it is clear, and I hope you enjoyed it. It's not a very long text. You can open the book and actually see it whenever you get time if you're more interested in this. See you in the next one. And if you're preparing, you can take up the MCQ course for NET, for HPSC. Anyone. We are having both. अलग-अलग syllabus के साथ. So the details are in the description box. Please refer to that. Also, group तो आप join कर सकते हो. Telegram पे group है. The link is there in the description box. Okay. See you in the next one. Like, share, and subscribe, please. Share it with others who you know from the literary backgrounds who would be benefited out of it. Thank you very much.